Good evening, everyone, and welcome to the Decode the Draft tools, tips, and techniques every law student must know. But before we move ahead, we would like to know something about you guys. So, if you are interested, please do let us know where are you joining from, what you do, in which course you are. Anyone? It's okay. You can also share your in the chat box also if you are not comfortable in opening your mics. Hello, Bhagwat. So, in just 15 powerful days, we promise to transform you from a curious learner into a confident contributor. By the end, you won't just belong to a community, you will engage, share, and grow with purpose. This isn't just a plan, it's our commitment to helping you build meaningful connections and create lasting impact. There's a fun fact also. In the legal drafting, a single misplaced word can alter an entire legal obligation. In the US, a missing comma once cost a company millions, famously known as the Oxford comma case. Courts have repeatedly criticized lawyers for mechanically copying templates without contextual thinking. Templates may be 80% ready, the remaining 20% often decides the case. Good evening, everyone. I am Gitesh Sinha and I will be your host for today's session. I am member of the events department. It is a privilege to welcome you all on behalf of the organizing committee. Should you require any assistance or have any queries during the course of the session, please feel to reach out to me. We hope this session will be both informative and impactful. At Canonsphere, we are building a dynamic space for legal minds to grow, collaborate, and thrive through debates, moots, blogs, quizzes, and workshops. We foster excellence and innovation in legal education, nurturing future lawyers, researchers, and change makers. We have two ventures, Canon Law Reviews and Canon Hour. Canosphere's Law Review. If you stick around the very end, we have prepared something special just for you students. A surprise perk that might include exclusive access to premium features, discounted offers, or even early entry and upcoming programs. We promise it's worth staying for, so hang tight, stay engaged, and let's finish strong. Today, we have honor to have Advocate Gaganpreet Kaur Gill, who has completed her BA LL.B from Chandigarh University, Mohali, Punjab, and is currently pursuing her LL.M in intellectual property rights from Chandigarh University, Mohali. She has hosted several moot courts competition and has secured multiple awards in various academic, legal, and co-curricular competitions. Ma'am, it's honor to have you. The floor is all yours. You can start. Take the lectures, ma'am. Thank you, Gitesh, for beautiful introduction. And good evening to everyone. It's a pleasure to be here with you today. So to start with, if I talk about today's professional world, not just only about law, but also about research, academics, and business, the word success doesn't only depend upon or is no longer defined only by what you know. Means जो word success है, it is not only dependent upon the word knowledge, but it is equally defined that how effectively you convert the knowledge into a clear, accurate, and well drafted work. As our session today only revolve around the word draft. So if I say that in today's era, the word draft is no longer associated with documents, but they are the supportive document which supports our arguments, strategies, lay down our liabilities and responsibilities which are written over an piece of paper. So this brings us today's theme, that is decode the draft,
tools, techniques, and tips. Next slide, please. So now the question here arises that why this topic matters. Can anyone tell me that why this topic is necessary to understand? Any rough idea? Hurry up, guys. Please keep this session interactive. Anyone has any idea that what is decoding the draft or why this topic is mandatory to understand, to learn? Okay, no problem. Most of the people think that the drafting word is only about having a good knowledge, proper formatting, or using the latest tools. If I give you an example, for example, you drafted a document, like, right, जिसमें you have written a proper fine language, the formatting is up to mark. Maybe you have taken the help of AI, but still you are somewhere in doubt that something is lacking over there, right? Lacking over there means the quality is not up to mark. So if I talk about the reality that the draft fail not because of poor language, but it fails because of weak thinking. क्यों? क्योंकि हम सारा काम AI की हेल्प से कर रहे हैं. If anyone is drafting any document, ठीक है, for example, if you are drafting any assignment for your, for your course summation, I can give you a guarantee damn sure that you are using chat GPT only. Even once the chat GPT is giving you the content, you are not even bother to review that particular document. हम अपना उस पर दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि वो ड्राफ्ट हमें कहना क्या चाह रहा है, व्हाट इज द मोटिव, पर्पस, एम ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्राफ्ट. So that is what today's legal drafting lack. That is because that is a weak thinking. So in today's session, we will learn that how to decode a draft, which will help us to understand deeply what is decoding a draft. अगर हम कोई ड्राफ्ट डिकोड कर रहे हैं, उसको समझना कैसे है, उसको रिफाइन कैसे करना है, उसको एक प्रोफेशनल एक्शनेबल आउटपुट में कैसे लाना है बिफोर इट्स फाइनल सबमिशन. बिकॉज अगर हम decoding the draft ही नहीं समझ पाए, we will just only end up with checking the grammatical mistakes, punctuation errors. We will never dive deeper into that what are the logic, what are the law and reasoning behind that particular drafting. So now moving to the next topic, what is the meaning of decoding the draft? Anyone has any rough idea कि decoding the draft का मतलब क्या होता है? Any rough idea? Like you are free to write anything what you understand by the term decode the draft. Next slide, please. Yeah. So in simple languages, right, Bhagwat, someone you are near. Yeah, right. I will simplify this term for you more and more. So if I define that what is a Gitesh, please एक slide पीछे करना, एक slide पीछे. Yeah. So if I read the meaning of the decoding the draft, it is basically the process of analyzing, interpreting, and transforming a preliminary legal document or any research note or any plan into a structured, precise, and actionable output. Or in simple words, means to understand, analyze, refining, and strengthening a legal draft before it is finalized or presented. So what I mean to say,
अगर मैं बात करूं, द डी कोडिंग ऑफ अ ड्राफ्ट इज नॉट अ मेयर प्रूफ रीडिंग। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को पढ़ना नहीं है कि हाँ जी हमने डॉक्यूमेंट खोला एंड जस्ट वी गो थ्रू दी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पंचुएशंस एंड द एरर। ड्राफ्टिंग, decoding the draft is beyond proof reading, right? And for decoding the draft, even you can't rely on, AI tool like ChatGPT. We've used it mostly because it is only a source from which we can take a rough idea or a, rough printout or blueprint, we can say. So decoding the draft in the simple words means to understand कि वो ड्राफ्ट जो आपको दिया गया है, वो ड्राफ्ट आपको कहना क्या चाहता है, राइट? उसमें क्या लीगल फैक्ट, इशू क्या उसमें बताया गया है, ठीक है? अगर इफ इट इज रिलेटेड टू सम केस तो उसमें उसके फैक्ट्स क्या है, लीगल रीजनिंग क्या दी गई है, लॉ प्रोविजंस क्या यूज करे गए हैं, वो पर्टिकुलर अगर केस फाइल करा गया है तो उस केस का मेन पर्पस क्या है, वो केस कहता क्या है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू आइडेंटिफाई कि वो एनफोर्सेबल है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, उसमें क्लैरिटी है, इज इट शॉर्ट, इज इट प्रिसाइज, is it following certain legal ethics means a code of conduct, right? सो इन सिंपल लैंग्वेजेस अगर मैं आपको बताऊं तो डी कोड द ड्राफ्ट ये होता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग ड्राफ्ट है, कोई भी बना हुआ ड्राफ्ट है, या कोई ऐसा ड्राफ्ट जिसे आपको क्रिएट करना है, राइट? वो आप क्रिएट कब कर पाओगे, या कोई क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है, आपको उसे पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ोगे उसे? उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि वो ड्राफ्ट किस बारे में बात कर रहा है, राइट? उसकी जो लीगल लैंग्वेज है, इट शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल वर्ड्स। देन द नेक्स्ट वन इज वो क्या कह रहा है, अगर वो कोई चीज स्टेट कर रहा है तो उसका रीजन क्या है, अगर वो रीजन दे रहा है तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है, सपोर्टिंग लॉ क्या है, राइट? आई होप आई एम क्लियर विद द मीनिंग ऑफ डी कोडिंग द ड्राफ्ट। इफ नॉट क्लियर आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। Guys, please respond. Am I clear with the term decoding the draft? To make it more clear, I can give you an example. For example, अगर मैंने आपको बोला that you have to create or draft an MOU, तो MOU को बनाने के लिए उससे पहले समझना तो पड़ेगा ना कि वो ड्राफ्ट बनेगा कैसे। आई टोल्ड यू कि डी कोडिंग द ड्राफ्ट हम किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट की कर सकते हैं या कोई डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो एमओयू को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उस ड्राफ्ट को डी कोड करेंगे। डी कोड करेंगे उसमें हम क्या क्या चीजें अंडरस्टैंड करेंगे कि वो पर्पस क्या है एमओयू का, उनमें पार्टीज कौन कौन सी हैं, राइट? व्हाट टर्म एंड कंडीशंस पार्टीज एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, उनके राइट ड्यूटीज क्या हैं, राइट? उसमें उसमें अगर कोई लीगल टर्म यूज करनी है हमें तो वो लीगल टर्म्स का मीनिंग क्या है, राइट? देन ओनली वी कैन ड्राफ्ट एंड प्रॉपर एमओयू जिसमें क्लियर आइडियाज हमने प्रॉपरली ले आउट करे हैं, प्रॉपर क्लॉजेस ऑफ एमओयू हमने लिस्ट आउट करे हैं, और उसमें कोई भी वर्ड इज नॉट अनक्लियर, मीन्स लीगल लैंग्वेज जो हमने यूज करी है इट इज नॉट फॉलोड बाय एनी काइंड ऑफ रिस्क और एम्बिग्विटीज, दे आर क्लियर इन इट सेल्फ। सो आई होप नाउ दैट यू आर क्लियर विद दिस पार्ट, द मीनिंग ऑफ decoding the draft. Okay, thank you, Patel, for responding. Much obliged. So, moving ahead, now in decoding the draft, हम इसमें तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है टूल, टिप्स एंड टेक्निक्स। जब मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगी यू विल बी फीलिंग लाइक मैम these all terms are very similar. How we can differentiate them? So before starting the main topic, I would like to clarify these three terms. जो वर्ड टूल है इट डिफाइंस कि आप कोई काम कैसे कर रहे हो, उसमें क्या रिसोर्सेज इंस्ट्रूमेंट्स यू आर यूजिंग। एंड द सेकेंड वन इज टिप्स। टिप्स मतलब
कोई भी टिप हो सकती है, ठीक है, लाइक आई एम टेकिंग दिस सेशन, मैं इसमें आपको कोई भी टिप्स सजेशन एडवाइस दे के जा सकती हूँ, दैट इज अप टू यू कि आपको वो फॉलो करना है या नहीं करना। एंड द थर्ड वन इज टेक्निक। अब डी कोडिंग द ड्राफ्ट में टेक्निक्स क्या होंगी? टेक्निक्स होंगी लीगल मेथड जो अप्रूव्ड बाय लॉ है, कि अगर इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी काइंड ऑफ रिसर्च, ठीक है, अगर आप मूड कोड कर रहे हो तो उसमें भी फॉलो IRAC मेथड, राइट? तो वो एक टेक्निक है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक टेक्निक है टू टू विच आर अप्रूव्ड बाय द लॉ टू अराइव ऑन अ लीगल आंसर। Clear? And these all three forms, that are tool, technique, and tips, are the foundation of a strong legal drafting. Only with the help of these three things you can form or create a strong legal document. Only with the help of these documents you can decode a document. So moving ahead, defining the term tools. So as I explained you that tools क्या होते हैं? tools कोई भी वो resources, devices या software हो सकता है जो आपको help करता है कि अगर आपने कोई particular draft बनाना है, then how you are going to create particular draft, कौन सा instrument, device, software use करोगे? If I simplify the definition more, so here the term resources means what kind of books you are referring for to understand your draft, right? What kind of legal databases you will be using, and then what kind of templates you will use, means overall it will guide your work. Resources will guide your work. And the second one is devices. So devices, it can be like you are going to draft the document handily or through a computer. Then software, what kind of platforms you are going to use, drafting tools कौन से use कर रहे हो, are you going to take the help of the AI or you are going to take the help of other apps? So ultimately इन सब का purpose ये रहने वाला है that they will only enhance your work, fasten your work, and help to create an accurate work. Moving to next slide. अब सबसे पहला टूल क्या होगा? सो इफ आई से दैट आई वांट टू वेरीफाई कि कोई केस लॉ है जो मुझे ड्राफ्ट में डालना है या ऑलरेडी ड्राफ्ट में है, तो उसके लिए मैं कौन कौन से टूल्स यूज कर सकती हूँ? SCC ऑनलाइन, मनुपात्रा, वेस्ट लॉ। तो दीज आर दी टूल्स जिनके थ्रू मैं वेरीफाई कर सकती हूँ कि अगर मैं लीगल रिसर्च कर रही हूँ या लीगल ड्राफ्टिंग कर रही हूँ तो उसमें ये टूल्स मैं यूज कर सकती हूँ, जो मुझे ये बता देंगे वेदर दीज प्रेसिडेंट्स आर बाइंडिंग इन नेचर और नॉट, उनकी साइटेशन क्या है, या जो इनके फैक्ट इश्यूज आर्ग्यूमेंट्स, वेदर दे आर राइट, वेदर दिस पर्टिकुलर केस लॉ इज रिलेटेड टू माई वर्क और नॉट. Then the other one is citation and reference tools. Zotero is one of the famous tool. You can download its extension with the and you can attach it, I think you can attach it with the Chrome maybe. So उसमें भी ये क्या होता है, you put the citation, ठीक है, and there is an option कि वो citation आपको किस स्टाइल में चेंज करनी है. तो Zotero what Zotero do, वो citation को उसी स्टाइल में आ जाएगा. If I like to change it into ILI style, तो वो उसी फॉर्म में आ जाएगा. सो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू. यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड यू कैन add it on your document. So in decoding the draft, this tool ensures that whatever footnote or references you are using, they are up to mark. And the next one is drafting and document management. For example, you want to manage the work at one place, or you feel कि आपको इसे added करना है later on, या it needs to be reviewed by someone. Like for example, कोई particular organization है, please move to the previous slide. Yeah. तो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, वी आर अवेयर कि हम उसे MS वर्ड में करते हैं,
राइट, उसे हम लेटर ऑन एडिट भी कर सकते हैं। गूगल डॉक्स में करेंगे, गूगल डॉक्स में करेंगे तो उसका एक्सेस हर एक इंसान के पास रहता है। अगर हम चाहते हैं कि उसे, लाइक इफ आई एम अ एम्प्लॉयर इन अ कंपनी, मैंने कोई ड्राफ्ट बनाया है एंड आई वांट कि मेरा हेड उसे रिव्यू करे, तो गूगल डॉक पे वो इजिली रिव्यू कर सकता है, क्योंकि उस ड्राइव का एक्सेस हर पर्सन के पास रहेगा, राइट। देन द नेक्स्ट वन इज, you can take the help of AI tools, as I mentioned, ChatGPT, case text. But if say, but as I mentioned earlier, कि ChatGPT is not the, you know, authentic one because it is outdated. इसका जो कंटेंट रहता है it is not updated. तो ChatGPT का आप सिर्फ एक रेफरेंस ले सकते हो, बट टू क्रिएट दी होल असाइनमेंट, डॉक्यूमेंट और एनी ड्राफ्ट यू कांट रिलाई ब्लाइंडली ऑन AI. इट कैन इट कैन ओनली असिस्ट यू कि अगर आपने कोई ड्राफ्ट बनाना है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन से क्लॉजेस आपको समझाने हैं, राइट, उसमें क्या क्या चीजें आपकी मिसिंग है जो आपने ऐड नहीं करी। तो AI सिर्फ उस चीज में आपकी हेल्प कर सकता है, बट नॉट फॉर प्रॉपर ड्राफ्टिंग ऑफ एन डॉक्यूमेंट और फॉर प्रॉपर डिकोडिंग ऑफ एन डॉक्यूमेंट। देन द नेक्स्ट वन इज प्लेगरिज्म एंड कंप्लायंस टूल। तो अगर आपने कोई ड्राफ्ट बनाया है या कोई ऑलरेडी ड्राफ्ट है, उसका आपको चेक करना है कि इज इट ऑथेंटिक और नॉट, कि ये AI की हेल्प से तो नहीं बनाया गया। फॉर दैट यू कैन चेक द प्लेगरिज्म विद द मोस्ट ट्रस्टेड टूल, दैट इज टर्टिन। आपको इसमें ओरिजिनलिटी पता चल जाएगी कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। सो इनडायरेक्टली दे डिडक्ट द कॉपी कंटेंट एंड विच हेल्प you to verify whether the text is AI generated or not. And it is one of the important pillar for the professional and ethical standard which are also being followed while decoding the draft. Then the next one is checklist and templates. So the purpose of the, checklist and the template is to ensure that no important clause is forgotten. Means your draft contains each and every important clause. So for that you can use a tool like contract clause libraries or drafting checklists. So they will help you by चेकिंग आपने हर एक चीज मेंशन करी है या नहीं करी. So it will let the ambiguities in the legal draft. And the next one is version and comparison. Version comparison tools. What does version and comparison tools do? Basically, they identify the changes जो आपके ड्राफ्ट में हुई हैं, राइट. MS वर्ड ट्रैकर है, ड्राफ्टेबल है, इसके थ्रू आप इजीली एक्सेस कर सकते हो कि इसमें क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, क्या मतलब इनडायरेक्टली आपको हेल्प करता है टू मेक द एडिशंस, टू मेक द एड ऑन्स, राइट. देन द नेक्स्ट वन इज visual mapping tools. So visual mapping tools simply break down the complex draft visually. Means अगर कोई ऐसा ड्राफ्ट है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट असाइनमेंट्स, राइट, इफ आई टॉक अबाउट कंपनी प्रोजेक्ट्स, उसमें दे पीपल यूज दी विजुअल्स. कोई चीज होती है विच इज नॉट इजी टू, मतलब जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना इजी लैंग्वेज, विच आर difficult to explain. So what we did, we used the visuals to explain that particular document. So उसके लिए you can go for Lucid Chart and Miro. And how these apps help to decode the document or to decode the draft. They simply convert the text into the charts, flow diagrams and timelines to clearly show what you are stating. Okay, if I talk about the draft, तो उसमें we can they simply define that who are the parties, what are the duties of the parties, what are the risk areas or gaps, all these things. So if in total or in summation I say, in conclusion I say that decoding a legal draft is not just only a reading. It means to check accuracy, structure and the changes and the risk. And all these things can be easily done
can easily take place only with the help of the tools, because these tools together ensure that correct law is applied, clear provisions are mentioned, clear clauses are followed by the draft as per the particular draft requirement, particular topic requirement, जो भी जिस भी related topic, जिस भी related हम draft prepare कर रहे हैं, and at the last they help us to prepare a professional drafting material. So the next one is decoding the draft tips. Yeah, before that, I would like to tell you that there are certain tools which are reliable, authentic. Next slide, please. तो अगर आपको टूल्स रेफर करने हैं फॉर योर ड्राफ्टिंग और डीकोडिंग द ड्राफ्टिंग, तो उसमें आप स्टैट्यूट्स, बेयर एक्ट्स, केस लॉ डाटाबेसेस यूज कर सकते हो, एंड कमेंट्रीज, ट्विटीज, टेम्पलेट्स, research legal research platform. As I discussed, it was the one of first and the foremost tool of decoding the draft. Checklist you can go for, yes. Contract management tools, grammar and proofreading tools, citation and referencing, Zotero हमने discuss करा, version control and track changes tool. So I hope that I am clear till this part. I hope I am clear that what kind of tools you can use to fasten your work, to do your work accurately and efficiently. Guys, am I clear? Okay, so next one is decoding the draft. Okay, thank you. Thank you for responding. So tips. Next slide, please. So as in the beginning of the session, मैंने आपको बहुत ही simple language में ये बताया था कि tips क्या होती हैं. Tips are only the suggestion. ठीक है, और ये सजेशंस कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द एक्सपीरियंस. इट इज नॉट कंपल्सरी टू बी फॉलोड. वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने वो टिप्स फॉलो करनी है या नहीं करनी फॉर डिकोडिंग द ड्राफ्ट, राइट? सो इन अ सिंपल लैंग्वेज, टिप्स आर ओनली प्रैक्टिकल एक्शनेबल सजेशंस होती हैं, या हम कह सकते हैं एक बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो एक प्रोफेशनल को या एक लॉयर को हेल्प करती हैं दैट वो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कैसे रिव्यू कर सकता है, कैसे एनालाइज कर सकता है मोर क्लैरिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ, एंड वेदर such document is enforceable before the court of law or not, and whether they follow the proper code of conduct or not, right? So अगर मैं बात करूं, अगर मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दे दिया, अब ये तो नहीं होगा कि आप उसको मतलब एक पार्ट पे पूरा 1 घंटा लगा दोगे. ठीक है, देर इज वन पैराग्राफ. ठीक है, द पैराग्राफ इज ऑफ 10 to 20 लाइन्स. अब ये नहीं होगा कि आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उस पैराग्राफ के ऊपर पूरा 1 घंटा लगा दोगे. नो. ठीक है, आप प्रॉपर टिप्स एंड टेक्निक्स यूज करोगे. या तो आप टेक्निक यूज करोगे विच आर एक्यूरेट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लॉ, एंड दूसरा किसी ने आपको टिप्स बताई कि हाँ जी आप इतने टाइम में ऐसे ऐसे चीज को रिव्यू कर सकते हो, इससे आपकी मिस्टेक्स भी नहीं रहेंगी और आपका डॉक्यूमेंट भी अच्छे से रिव्यू हो जाएगा. सो दीज दोज आर कॉल्ड टिप्स, राइट? सो द फर्स्ट टिप इज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या तो हमारा पहला टिप जो है दैट इज टाइम एंड वर्क फ्लो मैनेजमेंट. अब वही सेम एग्जांपल, अगर मैंने आपको कोई ड्राफ्ट दिया है टू रिव्यू करने के लिए, व्हाट यू विल डू, यू विल यूज योर टाइम प्रॉपरली. एक ही एक ही पैराग्राफ या एक ही पेज पे आप नहीं बैठे रहोगे, आप प्रॉपर टाइम फिक्स करोगे कि इतने टाइम में आई विल बी रीडिंग दिस पार्ट ऑफ द ड्राफ्ट, एंड देन इतने टाइम में इतना पार्ट. अगर उसमें क्लॉजेज हैं तो क्लॉजेज, अगर उसमें केस लॉज बताए हैं तो इतना टाइम फॉर केस लॉज. इफ दे आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन प्रोविजंस इन सेक्शंस तो उस प्रोविजन और सेक्शंस के लिए इतना टाइम, राइट? सो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर रिव्यूइंग एनी कॉन्ट्रैक्ट,
राइट तो अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, आप सबसे पहले उसके प्रोविजंस में जाओगे, उसके टर्म कंडीशंस में जाओगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना है तो उसके क्लॉजेस पे जाओगे कि उसका पेमेंट क्लॉज क्या कहता है, राइट, उसका लाइबिलिटी क्लॉज क्या कहता है, उसका टर्मिनेशन क्लॉज क्या कहता है। अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो बाय, अगर वो आर्बिट्रेशन के थ्रू डिस्प्यूट रिजॉल्व करना चाहते हैं और विद द हेल्प ऑफ लिटिगेशन, तो आप उन सब चीजों पे जाओगे। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। नाउ ये अगर आप वाइल रिव्यूइंग एनी डॉक्यूमेंट्स, इफ यू फील कि मेरे पास दो तीन डॉक्यूमेंट्स एंड दे आर रिलेटेबल, राइट, मैंने आपको दो तीन ड्राफ्ट दे दिए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तीन चार ड्राफ्ट पकड़ा दिए कि हाँ जी आपको इसे रिव्यू करना है, राइट, आपको उसे डी कोड करना है कि वो कहना क्या चाहता है। तब उसमें क्या करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू प्लेस इट टुगेदर, you will keep all the draft neat and in a one place, neatly and in a one place, right? You will store the draft and templates properly, right? You will search कि कौन सा draft is new है, कौन सा draft is new and which draft is old one. तो with the इससे क्या होगा that you won't be गेटिंग कंफ्यूज कि कौन सा ड्राफ्ट मैंने रिव्यू कर लिया है एंड कौन सा ड्राफ्ट मुझे रिव्यू करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर क्रिएटिंग अ कॉज लॉग, अगर आप कहीं पे कॉजेस वाला प्रोविजन डालने वाले हो जिसमें टर्मिनेशन, पेमेंट, राइट एंड ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटी, ये सारी चीजें रहने वाली हैं, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वहां पे आप ये लिखोगे कि इस ड्राफ्ट में ये चीज मैंने रिव्यू कर ली है, ये चीज उसमें मॉडिफिकेशन के लिए एडेड है, सो दिस इज नोन एज कि दैट यू आर ऑर्गेनाइजिंग the work properly, you're organizing the draft properly. Next slide please. Then the next one is legal research and draft analysis. So legal research and draft analysis, if I say in a single word, अगर मैं इसे बोलूं, it means legal checking, लीगली किसी चीज को चेक करना। So means it means to check whether the law is correct or not. And if you are checking whether the law is correct or not, what does it include? What will it include? It will include the laws and the cases mentioned are up to mark, they are correct, their citation is correct, right? A particular draft is consisting of important documents. जो term and जो terminologies होने चाहिए उसमें they all are mentioned. And जो एक जगह पे मैंने बता दी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो अगर मैंने एक जगह कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वर्ड आई हैव यूज, तो उसका पूरे डॉक्यूमेंट में मीनिंग विल बी सेम। ये नहीं होगा कि एक जगह मैं उसका मीनिंग कुछ और बता रही हूँ, दूसरी जगह उसका मीनिंग कुछ और रहेगा। सो दिस इज द थर्ड टिप, या। एंड द फोर्थ टिप, draft clarity and structure, means clear writing. If you are going to write any draft, you must write it very clearly. Means if someone else is going to read your draft, right, or even if you yourself is going to read the draft, it must be easy to read. Now how we can make the draft which is easy to read, जो easily किसी कोई और इंसान पढ़ सके? First of all, you are going to break the long clauses into the small part. We never write long sentences. ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें अंडरस्टैंड करना इज वेरी डिफिकल्ट। जितना हमारा डॉक्यूमेंट सिंपलर होगा उतना हमें अंडरस्टैंड करना इजी रहेगा, राइट? देन never mention paragraph, right? Always use the bullet points, okay? एंड जो भी हमारे क्लॉजेज रहेंगे, इट शुड बी इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव ड्राफ्टेड अ लीज एग्रीमेंट, ठीक है, लीज एग्रीमेंट में ड्राफ्ट कर रही हूँ, तो हाउ आई वुड बी mentioning the clauses, और मैं वो ड्राफ्ट कैसे ड्राफ्ट करूंगी? सो फर्स्टली आई विल बी mentioning about the parties, देन प्रॉपर्टी डिटेल्स रहेंगी, देन पेमेंट टर्म्स रहेगा, राइट एंड ऑब्लिगेशंस, एंड ऑन व्हाट कंडीशंस इविक्शन हो सकती है, टर्मिनेशन हो सकती है, राइट? सो दिस इज द प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस।
Next slide, please. And the next one is presentation and communication. Means whatever you are writing, it must be, you know, free from any ambiguity. जो भी आप कहना चाहते हो, it must be easily presentable हो. For example, आपके सामने ये पीपीटी चल रही है. अब यहाँ पे जो भी लिखा है, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट, राइट. पॉइंट्स में है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इसे. अच्छा कि हाँ, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन में ये पॉइंट लिखा है, मुझे पता है, मुझे समझ आ रहा है कि इसमें ये चीज लिखी है, राइट. तो इफ आई कनेक्टेड विद डी कोडिंग द ड्राफ्ट, तो उसमें ये कैसे रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर रिव्यूइंग अ डॉक्यूमेंट, तो उसमें क्या रहेगा, यू कैन यूज द टिप. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये क्लॉज मिसिंग है, तो यू आर गोइंग टू यूज अ कलर हाइलाइटर, राइट, विच इज रेड इन कलर. इफ यू फील कि देर इज सर्टेन ग्रामेटिकल एरर, तो आप उसे ग्रीन से हाईलाइट कर देंगे, राइट. तो इससे क्या होगा, लेटर ऑन यू कैन, वाइल प्रेजेंटिंग यू कैन फिगर इट आउट कि हाँ जी, यहाँ पे ये चीज मिसिंग है, यहाँ पे ये चीज एड ऑन हो सकती है, राइट. So, so in short, presentation and communications make the problem easy to see, right? And the next one is ethics and accuracy. So while decoding any draft, be careful and honest. It is one of the code of conduct that do not share draft without permission. होता है ना, जैसे लॉयर्स का होता है कि उन्हें अपनी क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है. सिमिलरली, यू आर नॉट अलाउड टू share your draft with anyone else without permission. Next one, check fact and number. Yeah, so check fact and number. So whenever you are reviewing any draft, you must ensure कि उसमें properly numbering करी गई है, properly facts and listed करे गए हैं, and you need to ensure कि वहां पे AI work ना हो, AI generated content ना हो. Because as I mentioned earlier, that using ChatGPT is good enough to summarize clauses or any kind of work, right? But but the cross verification should only be done with the help of the statutory provisions, not with the help of the ChatGPT, क्योंकि ChatGPT आपको सही लॉ, सही provisions नहीं बताएगा. बता सकता है, but in rare of the rare cases, right? So I hope the tips are clear to all. Like, they are very simple. Am I clear with the tips part? So in tips, we studied that you need to divide your time properly while decoding the draft. Like how much time you are going to devote on a particular page or particular paragraph, and then you need to organize your draft, in a well manner. It should not be, messed up with each other. And then I think next was legal checking, right? You need to check out what is the law is stated corrected or not. Is it in accordance with the draft or not? And legal writing is one of the other tip for decoding the draft. So I hope I am clear with the tips part. If anyone has any doubt, you may ask your doubts in the chat box. Guys, am I clear? Please respond. Okay, moving ahead. Decoding the draft techniques. Now, you may be confused again, as I mentioned earlier, that ma'am techniques and tips are similar words. But again, next slide, please. But again, मैंने आपको बताया that tips are only the advice. They are not binding upon you. It's your discretion that whether you want to follow those tips or not. But techniques are the binding part because they are the legally systematic methods which help you guys to interpret
analyze, improve, or finalize any kind of documents. And while reviewing these documents, three kind of question arises. Is the law correctly applied? Is the structure is logical? Does the document is addressing the legal gaps or any kind of risk or any kind of ambiguity? So one of the technique is, next slide please. So while decoding the draft, what is the first technique we can apply is research and analysis technique. This technique check whether the draft is legally correct or not. And to check out the same, we can go for critical appraisal. Means you can check if the law and the cases are used in a correct manner, whether they are updated, proper citation is used or not. Then triangulation. Triangulation means to check whether whether the one legal point means whether what different jurists or experts are talking about one legal point. Means एक चीज को लेकर बाकी लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है. मीन्स अगर इफ आई एम टेलिंग यू कि ये टेक्निक्स हैं, तो आप मे भी हो सकता है कि इस सेशन के बाद मेरी जो टेक्निक्स बताई हैं उसके बाद यू आर गोइंग टू सर्च ऑन द गूगल कि इसके अलावा और क्या क्या टेक्निक्स हैं, राइट. Then simple visualization or table or timelines for clarity. So इसमें क्या रहेगा that you can symbolize your visuals. You can use table, chart to understand कि अगर कोई document है उसमें ये dates हैं, these are the duties. Next one, problem solving techniques. So these techniques basically help you to fix the problem in the draft. For example, you need to find out the root cause. मीन्स कि वाई अ क्लॉज इज कंफ्यूजिंग तो नहीं है, कोई रिस्की तो नहीं है. अगर उसमें कोई क्लॉज आपको मेंशन करा गया है, ठीक है, अगर कोई ड्राफ्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ या क्लॉज मेंशन करा गया, यू आर गोइंग टू एनालाइज इट कि वो क्लॉज मेंशन क्यों करा गया. अगर करा गया है उसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या नहीं है. मीन्स इन इट्स नेचर वो एम्बिगुअस तो नहीं है, मीन्स वेग तो नहीं है, अनक्लियर तो नहीं है. Then design thinking. Design thinking means you are means client centric drafting go. जो क्लाइंट कहना चाहता है यू आर ड्राफ्टिंग दैट पार्ट. ये नहीं कि अपनी ही हाइपोथेसिस यू आर राइटिंग डाउन. नो, अंडरस्टैंड व्हाट द क्लाइंट नीड इज, फाइंड फिगर आउट द प्रॉब्लम, राइट. एंड नेक्स्ट वन इज डिसीजन मैट्रिक्स टू चूज बेस्ट क्लॉज. सो एक में कौन सी टेक्निक यूज करनी है और या कौन सा ऑप्शन यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज एन डिस्प्यूट, ठीक है, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में हम क्लॉज डाल रहे हैं कि हमें आर्बिट्रेशन से करना है या लिटिगेशन से करना है. तो यू आर गोइंग टू चूज आउट कि हमें अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो भी हम उस ड्राफ्ट में मेंशन आउट करेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम वी आर गोइंग फॉर आर्बिट्रेशन और कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन मींस या लिटिगेशन जा रहे हैं, राइट. नेक्स्ट वन, drafting and writing techniques. So these techniques basically makes the draft easy to read, right. जैसे I mentioned it earlier, मूड कोर्ट होता है. मूड कोर्ट में हम क्या करते हैं while preparing for the issues argument or arguments advance, उसमें what we do we follow the IRAC method. Means firstly हम ये देखते हैं कि what the issue is. Then second वी फिगर आउट कि इसमें कौन सा लॉ अप्लाई हो सकता है. अगर लॉ अप्लाई हो रहा है तो वो लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है उसमें हम उसे एक्सप्लेन करते हैं. देन द लास्ट वन इज कंक्लूजन. मीन्स वी फाइंड आंसर टू द इशू, राइट. Then chunking means you are going to break down the long sentences into the smaller and then you are going to check out कि कोई भी चीज is not repeated again and again in your draft. For example,
there is one long indemnity clause from the contract law, right? So अगर हम उसे review करेंगे, so you will assure that particular thing is divided into three parts. First one is कि उस indemnity clause में what is covered, what is not covered, and what is the time limit. Okay, next part. Next is presentation and engagement techniques. So these techniques basically help us to explain the draft to the others. इसमें क्या होता है, as we studied in the tip, that the presentation must be clear, must be easy to explain, easy to see, right? The same technique is same tip is followed here, but it is followed through a systematic and a legal way, right? So first one is storyboarding. Storyboarding में क्या होगा, that you are going to decide clause order before writing. अब जब whenever you are decoding the draft which is already written, or you are going to write any draft, उससे पहले decoding करोगे, you are going to decide the logical sequence, right? Then you are going to use examples for that, right? Then other one is scenario based interpretation रहेगा. सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप उस चीज को डिस्क्राइब करोगे या उसका डिस्कशन करोगे विद योर peers, right? Next one. Next one is an advanced analytical techniques. So these techniques are basically used in big or important documents, जिसमें हम टाइम एनालाइज करते हैं. We guess the future disputes from the past cases, right? Then another one is scenario planning. Means we draft the causes for what if situation. अगर ये चीज हो जाती है तो उसमें क्या होगा? We draft these particular points, right? Then the other one is benchmarking with industry standard. Means we are going to compare the clauses with the standard agreements. For example, if you for example checking confidentiality clause with the standard company contract. अब हम उन दोनों को क्या करेंगे? Compare करेंगे, right? So it is one of the advanced analytical technique. Moving ahead, what is the difference between tool tips and techniques in decoding the draft? So it is very clear. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि these terms are similar but there is a difference. Next slide. Where the tools basically where the tools basically tell us that how you are going to matlab means what kind of sources instruments you are going to use to do your work, to summarize your work, to decode your work, right? And what is the main purpose of the tool? The main purpose of the tool is to fasten your work and to make the work easier. But remember one thing, these tools can only make easier work, can ये आपका काम इजी कर सकते हैं, फास्ट रन कर सकते हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू डू दी करेक्शंस देमसेल्फ, राइट? चैट जीपीटी है, आप चैट जीपीटी से असिस्टेंस ले सकते हो, बट दिस टूल इज नॉट गोइंग टू टेल यू कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है, क्योंकि हम उसे पढ़ेंगे ही नहीं, राइट? सिर्फ अगर यू आर यूजिंग दी टूल्स तो उसके लिए भी हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, राइट? देन द नेक्स्ट वन इज टिप्स. So tips are only the advices on how you can work more and more better. As I told you that tips are only followed by experience. They come from the experience. They are helpful, but they are not binding, not compulsory. And their main aim is to improve the speed, clarity, and the efficiency of your work only. And the other one is the last one is techniques. So techniques are only the proper method, are the legal method which are used to work with more efficiency and accurately. These are the systematic and rule based. They are the proper system, the proper sequence is laid down. So this was all about the difference of decoding a draft, that is tool versus tip versus technique. So I am going to give you a very easy tip here कि हमें ये यूज कैसे करना है इन फ्यूचर. इफ यू आर गोइंग टू डीकोड एनी ड्राफ्ट, तो बस ये चीजें यूज करनी है. पहला होगा आपका टूल.
टूल में व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, कि आप कौन से टूल्स यूज कर रहे हो, मीन्स व्हाट यू यूज टू वर्क, MS Word, online database, case commentary, book, right? And the other one is step, means how to work better. ठीक है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, राइट, ये सारी चीजें यू आर फॉलोइंग. देन टेक्निक्स, मीन्स हाउ टू वर्क मोर एक्यूरेटली, जो हमारा लीगल फील्ड से अलाइन करे, राइट. सो द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So what is the importance of these triplets? Basically, these three triplets are the foundation of the legal drafting. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है that why these triplets matter? ये triplets matter क्यों करते हैं? So in simple language, these triplets matters because तीनों का अलग अलग फंक्शन है. If I talk about tools, so these tools provide the necessary support which enable the lawyers to work with more faster, with efficiency and with accuracy. Whereas the tips offer you guys the practical guidance that ultimately help to reduce the errors, improve the clarity, and make your document effective. Whereas techniques are only the systematic method, is the only systematic method that ensure कि जो आपका draft है, it is logically structured, it is legally sound, and it is enforceable in nature, right? So together these, अब एक साथ ये क्या करते हैं, दे टर्न योर रफ ड्राफ्ट. ठीक है, अगर आप इन फ्यूचर को अभी भी कोई ड्राफ्ट डी कोड करोगे, अगर कोई जजमेंट को पढ़ना चाहोगे, ठीक है, तो ये सारे टूल्स आपके वहां पे हेल्पफुल रहेंगे. तो ये ड्राफ्ट क्या करेगा आपका, ये सारे टूल टिप्स या टेक्निक्स क्या करेंगी, आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल और एक इन्फोर्सेबल ड्राफ्ट बना के देंगी. कि अगर आपने किसी जजमेंट से अपना लेजिस्लेटिव कमेंट बनाना है, जहाँ कोई केस लॉ ड्राफ्ट करना है, कोई ब्लॉग राइटिंग करनी है, तो ये सारी चीजें वहां आपको हेल्पफुल रहेंगी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या नाउ व्हाट इफ दिस ट्रिपलेट आर मिसिंग, अगर ये तीन चीजें हम फॉलो ना करें. द कॉमन सेंस, द ड्राफ्ट में बिकम कंफ्यूजिंग, ड्राफ्ट क्लियर ही नहीं होगा, वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, उसमें एरर्स रह जाएंगे, ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है, ये सब चीजें मिसिंग हो जाएंगी, साइटेशंस आपकी गलत हो सकती हैं, केस लॉ आपने नाम किसी और का लिखा है और एक्सप्लेनेशन आप किसी और की दे रहे हो, राइट. तो ये सारी चीजें वहां पे मिसिंग रहेंगी. नेक्स्ट स्लाइड. Now arises that are you guys relying on AI tool a lot, right? तो यहाँ पे क्या होगा, that don't rely on AI tools. I would suggest you कि बिल्कुल भी नहीं. जैसे चैट जीपीटी है, उसमें सिर्फ आप हेल्प ले सकते हो ड्राफ्ट को कि क्या कैसे कैसे बनाना है, ठीक है, लीज एग्रीमेंट बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वहां पे आप एक रफ आइडिया ले सकते हो. क्योंकि एआई एक ऐसा टूल है जो आपको सिर्फ हेल्प कर सकता है, ठीक है, बट इट कैन नॉट रीप्लेस अ लॉयर, इट कैन नॉट रीप्लेस अ ह्यूमन थिंकिंग. ह्यूमन माइंड को रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट. वी कैन जनरेट इवन अ मोर बेटर आइडियाज देन एआई टूल्स, अगर हम अपना दिमाग लगाएं. Okay, so with this, we have certain ethical and academic safeguards. So while decoding any draft, every lawyer and a law student must follow certain core values. As we discuss and tip कि जो भी आपका draft होगा वो confidential रहेगा. Never share your draft with others and never upload any kind of confidential document on AI tools. राइट, क्योंकि वहां से भी आपका डाटा चोरी हो जाता है. एंड ऑलवेज यूज द सॉफ्टवेयर जो सिक्योर हो, जो ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो, राइट. एंड द सेकंड वन इज एक्यूरेसी एंड ऑनेस्टी. सो द अदर ethical and academic safeguard is accuracy and honesty. Make sure आपका जो भी law and facts आप mention कर रहे हो in the draft are correct. Check the sections, statute, case laws. Don't blindly rely on AI, right? As I told, that use your mind, use the smart tips and techniques.
देन द नेक्स्ट वन इज प्लेगरिज्म। अगर आप किसी भी तरह का ड्राफ्ट पढ़ रहे हो, जहाँ कोई ड्राफ्ट बनाओगे, ऑलवेज गो फॉर द प्लेगरिज्म चेकिंग। बिकॉज हमें पता तो है, हम अगर एआई से बना रहे हैं तो हम उसे पढ़ेंगे नहीं तो वहां पे कुछ ना कुछ हमेशा गड़बड़ रहेगी। सो आई ऑलवेज सजेस्ट, इफ यू अडेयर सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसमें पहला कोड ऑफ कंडक्ट प्लेगरिज्म ही जाएगा कि हमेशा डॉक्यूमेंट का प्लेग चेक करो। देन द नेक्स्ट वन इज एआई ट्रांसपेरेंसी। सो हेयर दैट यू नीड टू यूज एआई वेरी क्लियरली, क्योंकि एआई कैन हेल्प यू, ठीक है, बट somewhere it can also make mistakes. So always review and edit the AI content. Always cross check it with the books or legal databases कि जो AI कह रहा है, आपने भी वही लिखा है, क्या वो बुक्स के अकॉर्डिंग, क्या वो ऑनलाइन डाटाबेसिस के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। देन फेयर प्रैक्टिस। So fair practice means be fair and ethical in drafting. Means never hide the important facts. Do not use confusing or misleading language. Always follow the legal and ethical rules. Right. Next slide. Yeah. So again, use it wisely. किसे यूज करना है वाइजली? एआई को, बिकॉज टेक्नोलॉजी nowadays is very powerful tool. If you use it wisely, technology help you to work faster, better, and more accurately. But if on the other side, if you guys are using it blindly, the technology make your work look like, मतलब आपका work could be look like good, but it cover a poor understanding and weak thinking. But उसमें जो फॉर्मेटिंग होगी, लैंग्वेज होगी, इट विल बी टोटली पुअर इन नेचर। ठीक है, देखने वाला उसको जब पढ़ेगा तो ही विल से कि नहीं, राइट। सो नेक्स्ट लाइन। सो विद दिस we have Gitesh, yeah. So we have an important question which is arising over here. That is a flawed draft caused by weak language or unclear legal thinking. So मुझे ये लगता है that you people can answer this question, क्योंकि हमने पूरे सेशन में हमने मेन चीज तो ये समझ ही ली होगी कि एक पुअर ड्राफ्ट किस रीजन की वजह से होता है, हमारे अनक्लियर लीगल थिंकिंग की वजह से या लैंग्वेज की वजह से। सो कम ऑन गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड। एनी रफ आइडिया जो आपको इस सेशन के थ्रू पता चला हो कि हाँ, अगर हम एक ऐसे ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो वो क्यों हो सकता है। सेशन के बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कि एक लैंग्वेज प्रॉपर फॉर्मेटिंग, इट डजेंट मैटर। कोई भी ड्राफ्ट है, इट इज जस्ट wrong in nature, it is just weak in nature because of the unclear thinking. Real problem is unclear thinking, क्योंकि हम AI टूल्स पे रिलायबल हैं, हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, राइट। या एक्सीलेंट भगवत, एक्सीलेंट। सो या फाइनली दिस सेशन इज फ्रूटफुल। किसी ने सही आंसर तो दिया, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। सो यही है कि जो रियल प्रॉब्लम है, इट इज जस्ट अनक्लियर थिंकिंग, ठीक है। क्योंकि वीक ड्राफ्ट में क्या होता है, वीक ड्राफ्ट बनता तब है जब हम लॉज फैक्ट्स को क्लियरली लिख नहीं पाते, जो हमारे आइडियाज हैं हम उसे प्रॉपरली ले डाउन नहीं कर पाते, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होता, हम क्या कहना चाहते हैं, हमारा पूरा ड्राफ्ट क्या कह रहा है, हमारा हम डी कोड नहीं कर पाते, प्रॉपर कंक्लूजन पे नहीं आ पाते, राइट। सो हेयर thinking is the real issue, not AI, not any grammatical tool can fix your unclear thinking. You need to use your minds, right? Next one. Next slide, please. So yeah. So here the answer to the question is basically that a strong draft reflect clarity of research, logical sequencing of ideas, and disciplined use of drafting tool and techniques. So yeah, it is basically the opposite of the flawed draft। मतलब जिसके पीछे मेन रीजन क्या है, अनक्लियर थिंकिंग। जितना ड्राफ्ट क्लियर होगा, स्ट्रांग होगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारा स्ट्रांग लीगल थिंकिंग, राइट। एंड